students. Today I want to explain the new chapter, that is improvements in food resources. As you know that each living organism depend on the food, and if food is not present, then existence of living organism is not possible. You know that early human beings started hunting animals and collecting fruits, flowers and roots of the plant to meet their food requirements. Food is required for growth, development of the body and repair the body cells. And you know that it also protect our body from the different types of diseases and provide energy for doing all the life functions. For example, food supplies proteins, carbohydrates, minerals, fats. Okay, fats means lipids, vitamins and water to our body also. Among all the living organisms, only green plants are autotrophs. And you know that they make their own food. In fact, green plants perform a basic metabolic activity that is called photosynthesis. In photosynthesis, by using the energy of sunlight, green plants combine with the carbon dioxide and water and to form the carbohydrate, that is glucose, in the form of food. In contrast to green plants, animals and human beings are heterotroph. As you know that they will depend on plants and other animals for the food. Since time immemorial, then human beings have been doing farming and rearing animals to meet their food requirements. So plants as food are gift of nature to humans and most animals. In fact, different parts of plants such as root, stem, then leaf, flower, fruits are consumed by humans in the form of cereals, vegetables, spices and fruits. Okay, so animals produce milk, egg, meat, then which are also supplement our food requirements. So you know that sustainable agriculture and organic farming. What is that sustainable agriculture and organic farming? With you know that 1 million people in our country, they will ranks in second in population growth around the world. According to us, an estimate by the year 2020, Indian population would rise to 1.343 billion. To feed such a huge population, we will require at least 241 million tons of grain production per annum. Okay, therefore, it is necessary to increase the production of both plants and animals. Okay, so even in the past, to meet the demands of growing Indian population, our scientists such as Swaminathan and Kurin adopted the method to increase the food production, and this resulted in a variety of revolutions which help Indian to become self-reliant. And these revolutions included green revolution, then blue revolution, white revolution and yellow revolution. So what is the green revolution? High production of food grains. So you know that green revolution green revolution green revolution is the mainly high production of food grains. Okay, so you can write that green revolution, it is the high production it is the high production of food grains. Okay, so you can write high production of food grains. So that is green revolution. You can write the green revolution. Green revolution means high production of food grain. Okay, second one,
that we can take the another revolution, that is blue revolution, enhances fish production. So blue revolution, fish production, it is related to fish production. Green revolution related to the production of grains, mainly food grains, cereals, okay, and blue revolution production of fish production will be there. It will enhance the fish production. And white revolution increase the milk production. Then white, you know that white is milk, so white revolution increase the milk production. So it will related to the milk production. White revolution related to the milk production, and yellow revolution is increased oil production. So yellow is oil. So next is yellow revolution, which will be increases the oil production. Okay, so yellow revolution increases oil production, increases oil production. As you know, the color of the oil is yellow. Okay, so according to the color, these are named. According to the color, their name will be there like that. Okay, so these are the different revolutions. First is, that is green revolution, that is for the production of food grains. Second, blue revolution, that is for the production of fishes or fish production. White revolution, that is for the milk production. And last one is yellow revolution, which will increase the oil production. Okay, so these are the different revolutions. Now our scientists are continuously making efforts to increase the pulse production to spread the golden revolution also. Okay, so golden revolution will be depend upon the production of pulses, all the pulses. Okay, do you know what is sustainable agriculture? Actually, the sustainable agriculture can be defined as the adoption of various farming and production management techniques to maximize agriculture yield. Okay, so implementing such practices would help in conserving natural resources, then maintaining environmental balance and coping with changing human needs. Hence, to ensure the sustained livelihood of Indian farmers and related persons, it is necessary to adopt sustainable agriculture practices. What are these? You know that these are the mixed cropping, then crop rotation, intercropping, integrated farming, that is also known as integrated agriculture. Okay, so you know what is the farming? Actually, farming is the process in which you can say that harnessing solar energy from the plants and animals in the form of economic production, or conservation means careful utilization or preservation or restoration of the natural environment and resources. Okay, so farming, it is a process, the harnessing solar energy from plants and animals in the form of economic produce. Okay, and integrated agriculture implies a combination of agriculture with other forms of culture such as pisciculture, aquaculture, apiculture and sericulture, and poultry farming also, piggery, livestock production like animal husbandry, etc. You know that what is pisciculture? Pisciculture Pisciculture is the rearing of fishes on large scale. Okay, so you can say rearing of fishes. Rearing of fishes on large scale, that is known as pisciculture. Okay, sericulture, rearing of
silkworms. Okay, so you can say that rearing of silkworm is an sericulture. Okay, so then pisciculture is there. Apiculture. Apiculture is beekeeping, means rearing of honeybees on large scales. Beekeeping culture will be there. After we can take the honey from the beekeeping. Okay, so these are the different cultures, or mainly different cultures. These are the pisciculture. Pisciculture means fish culture. Aquaculture, then apiculture. Apiculture means beekeeping. Okay, then sericulture, it means silkworm culture. Sericulture means silkworm culture. So these are the different cultures from which we can increase the integrated agriculture also. Okay, now what is the advantages of sustainable agriculture? Sustainable agriculture के advantages क्या हैं? Actually achieves the integration of natural biological cycles and controls. Okay, protects and renews soil fertility and the natural resource base. Okay, then optimize the management and use of farming resources, reduces the use of non-renewable resources and purchase production. Okay, then provides an adequate and dependable form of income. Okay, then promotes opportunity in family farming and farm communities. Okay, so what is organic farming? Do you know what is organic farming? Actually, it is the practice of raising crops which have not been polluted with the use of manures, biofertilizers, biopesticides. Instead, a healthy cropping system that provides optimum nutrients to plants and keep the pest as well as weeds under controlled are used. In organic farming, actually what we will do, in organic farming there is a little or no use of chemical weeds. Under control are used in organic farming. Then there is a little no use of chemical fertilizers or pesticides. Okay, and means organic, it is related to the living organisms. It means in organic farming we can use the manures instead of instead of pesticides, instead of chemicals or fertilizers. Okay, so you can say that there is no toxicity due to the pollution, mainly pollution of crop, plant, soil, water or air. Organic waste are recycled in the form of manure. Okay, and biofertilizers include the nitrogen fixing organisms. You know that that is bacteria, blue green algae and bacteria, rhizobium bacteria. Okay, so biofertilizers, these are the bacteria and blue green algae, and minerals that solubilizing the bacteria. Biopesticides are organisms or their extract which repel or kill the weeds, insects and other pests. You know the pests are the organism which harm our crop. Okay, so these are the different things. As you have just seen or you have heard by your ancestors that neem leaves are often used in the grain storage as biopesticides. Healthy cropping includes mixed cropping, then intercropping and crop rotation also. So the cropping system helps to control the insect, then pest and weeds. Weeds are unwanted plants which will grow by their own. We are not able to grow them. They will grow by their own. These are the weeds. Weeds are the unwanted plants actually. Okay, so what are the advantages of organic farming? If we will discuss that advantages, actually organic farming prevent pollution of any component of our environment. Means environment बिल्कुल साफ रहेगा, pollution नहीं होगा. Farm waste are recycled. जो भी farm में waste होगा that should be recycled, and the foods obtained from organic farming are free from pesticides and toxic chemicals. जो भी हम food खाएंगे organic farming का,
सो उसमें ना तो पेस्टिसाइड्स होगी ना टॉक्सिक केमिकल्स होगा, सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ. ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन द सॉइल हेल्थ ऑल्सो. सॉइल को ना बेसिक बनाएगा ना उसको एसिडिक बनाएगा. एंड द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग keep insect pest and weeds under check. Okay, so these are the different advantages of organic farming. Now we can take that some definitions. Do you know what is agronomy? The branch of agriculture science dealing with the production of field crop and management of the soil. So that is known as agronomy. एग्रीकल्चर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर साइंस है जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड क्रॉप एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल. सेकेंड, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ agriculture that deals with the growth and management of fruit and flowering plants in ऑर्किड्स है, गार्डन्स है. तो फ्रूट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनको हम ग्रो करेंगे. सो दैन इट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. फॉर द डेकोरेशन पर्पस भी आप कई बार करते हो. ठीक है, फ्रूट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है. नन ओलेरीकल्चर. ओलेरीकल्चर है रेफर्स टू द ग्रोइंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स, उसको ओलेरीकल्चर बोलते हैं. एक्वा कल्चर मतलब क्या होता है? द फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन बॉडीज ऑफ वाटर फॉर इकोनॉमिकल पर्पस. ठीक है, मीन्स हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिकल पर्पस के लिए हमने क्या किया? एक्वा कल्चर किया. तो एक्वा कल्चर में फार्मिंग करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की वाटर बॉडीज़ में. तो वाटर बॉडीज़ में प्लांट्स एनिमल्स, जैसे ट्रापा है, हम लोग खाते हैं ट्रापा. सो दैट वी विल जस्ट सेड एक्वा कल्चर. ठीक है, एक्वा कल्चर से हमें ट्रापा मिलेगा, फिशेस मिलेंगी. सो दैट इज एक्वा कल्चर. एग्रोनोमिस्ट. एग्रोनोमिस्ट स्टडीज क्रॉप डिजीज, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉप rotation and climatic factors, test the soil, investigates the causes of soil erosion also. ठीक है, and designs land reclamation and irrigation schemes. तो इसको एग्रोनोमिस्ट बोलते हैं. नाउ आपने सुना होगा types of crops. What are the types of crops? Two types of the crops are there, that are kharif crop and rabi crop. It's I think you have learned these types of crops in the class 8th also ना. types of crops, two types की होती हैं crops. एक तो खरीफ है, दूसरी रबी crops. So kharif crop and rabi crop, two types of the crops are there. So let us do that next topic, that is types of crops. Okay, so types of crops are there. Types of crops. What are the types? Two types are there, that is kharif crop and rabi crop. ठीक है, so two types of the crops are there, kharif and rabi crop. Kharif crop and rabi crop. Kharif grown during the rainy season, and rabi crop we will grow during the winter season. Okay, so kharif crops are grow during the rainy season, that is June to October. So you can write that these are growing during the June to October. It means they will be grown during the June or July, during the monsoon season, and it will be just harvested during the October time. Okay, so that kharif crop is also known as summer crop or summer season crops. So it is also known as summer season crops. Okay, why? Because it will be grown during the time of summer. And rabi crop, they are growing during the winter season, so that's why these are also known as winter season crops. Okay, so what are the examples of that summer crops? The examples of summer crops or kharif crop mainly maize, rice. You can write the
Examples: maize, rice, millets, okay, then groundnut, soybean, millets, etc. These are the examples of kharif crop. And kharif crop is also known as summer season crops. Why? Because they are growing during the season, summer season, June or July. Okay. Next, rabi crop. These are also known as winter season crops. So you can write they will be grow during the time of November to April. So you can write that they will be grow during the November to April. It means they will be grow during the time of November, October, November, and they will be harvested during the March, April. Okay. So, and that's why these are known as winter season crops. So, you can write that winter season crops. These are known as winter season crops. Okay. And the examples of the winter season crops or that rabi crops are mainly wheat. Wheat is the main example. Barley, wheat, then mustard, wheat. Example, you can write the examples: wheat, barley, mustard, gram, etc. etc. Okay, so these are the different crops. Now you can easily differentiate between these two crops also. How you can differentiate? That kharif crops are mainly monsoon crops. These are growing during the rainy season. That's why they are also known as monsoon crops or summer crops. Okay, and these crops grow in hot and wet conditions, and these mainly crops are shown in the beginning of the rainy season during the June or July. Okay, and these are harvested during the September, October, at the end of the monsoon. Okay, and examples that I told you: rice, maize, groundnut, soybean, green gram, then cotton, black gram. These are the examples of kharif crop. If we will take the another crop, that is rabi crop. Rabi crop are non-monsoon season crops. These rabi crops are non-monsoon season crops. These crops are grow in cold conditions, mainly cold and nearly dry conditions. Okay, and then they are sown in October, November with the monsoon is retreated. Okay, then these crops are harvested in March, April, or before the advent of hot season, you can say that. And examples mainly wheat, barley, millets, then wheat, barley, gram, mustard, that I have written over here, linseed, pea. These are the examples of kharif crop. Okay, now next topic we can take that improvement in yields. How we can improvement the in our yield? So improvement in yields. How we can improve our yields? Actually, the three scientific approaches are here that is adopted in India to obtain high yield from our agriculture farms. And these are the three. First one, the crop management. Okay, how we can manage the crop. So let us discuss this. So let us discuss how we can improvement in our yields. So we can improvement in our yields mainly by the three scientific managements, or three managements are there. What are these? First is crop production management, second is crop variety improvement, and third is crop protection management. So you can write that also. First is crop production management,
Second is crop variety improvement. Okay, we should improve the variety of the crop. So second you can write the crop variety improvement. Crop variety इम्प्रूवमेंट, वैरायटी इम्प्रूव करेंगे हम, क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है. एंड थर्ड वन व्हाट वी विल डू कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, दैट वी शुड मैनेज. ओके, सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. So these are the three methods through which we can improve in our yield. Okay, so first crop production management. How we can just manage the crop production? Actually, you know that India is an agriculture based country. Okay, and in this country agriculture sector engages about 70% of the population and accounts for 40% of the gross national product. Okay, that is known as GNP. Farming practices being followed, how will be followed depend upon the size of the land holding, education and financial conditions of the farmers. And the production practices include no cost production, then low cost production and high cost production. High cost production is based on the improvement high yield varieties. Okay, improved farming practices, modern technology, latest agriculture machines and implements. Got it? And crop production management refers to the controlling various aspects of crop production to obtain the maximum and best yield. It has three components. What are the three components? एक तो nutrient management, how we can manage the nutrient, second irrigation and third crop pattern. So the three components are interrelated with the crop management system. What are these three components? So three components you can write here, three components. So components you can write that components for crop production management. ठीक है, तो components for crop production management. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ठीक है, हाउ वी कैन मैनेज द न्यूट्रिएंट. तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. सेकेंड कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकेंड कंपोनेंट क्या है? सेकेंड कंपोनेंट क्या लेंगे हम? सेकेंड कंपोनेंट है इरिगेशन. ओके, सो सेकेंड कंपोनेंट इज इरिगेशन एंड थर्ड कंपोनेंट इज क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, तो थर्ड जो लेंगे वो है क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉप का पैटर्न क्या होगा? सो क्रॉपिंग पैटर्न शुड बी द थर्ड कंपोनेंट. ये तीन कंपोनेंट्स हम लेंगे मेनली. ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे. फर्स्ट वी विल टेक द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. एक्चुअली न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स क्या है? कंट्रोलिंग. क्या कंट्रोल करेंगे? मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप. कि टाइमिंग क्या है? सेलेक्ट किया आपने, क्या टाइमिंग है, कितना अमाउंट है न्यूट्रिएंट का, कौन सा न्यूट्रिएंट आप लोगे. सो दैट शुड बी कंट्रोलिंग बाय अस. हम लोग कंट्रोल करेंगे या फार्मर्स कंट्रोल करेंगे. लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, plants also require inorganic elements for building their structures and maintaining their metabolic process. पता है आपको? Then these inorganic elements are called nutrients. इन्हीं inorganic elements को हम क्या बोलते हैं? Nutrients, जो plants को चाहिए, plant की growth के लिए चाहिए. ठीक है,
प्लांट की बिल्डिंग बनाने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू द प्लांट्स बाय एयर। कैसे सप्लाई होंगे? एयर से, वाटर से या फिर सॉयल से न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे, ठीक है। नाउ देयर आर 40 एलिमेंट्स फाउंड इन द प्लांट एश, but only 16 of them elements are essential for the growth of the plants and development of the plants. 16 ही essential है. These 16 elements are called essential elements. Essential elements बोलेंगे या फिर essential plant nutrients. 16 है ये mainly, ठीक है। इन 16 में ये सारे सोर्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ये 16 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के। तो उनके सोर्सेज क्या हैं? 3 सोर्सेज हैं। या तो ये मिलेंगे एयर से, तो सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो आप, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये कौन से न्यूट्रिएंट्स है? 16 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, 16 essential nutrients. These are essential for the growth and development of the plant, ठीक है। ये 16 nutrients है जो essential है, ओके। सो ये जो sources है, मेनली sources क्या है इनके? sources या तो air है, या water है, या फिर soil है, ठीक है। air, water और थर्ड सोर्स कौन सा हो सकता है? soil हो सकता है, ठीक है। अब एयर से क्या मिल रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन आपको एयर दे रहा है। देन वाटर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन, ओके। अब थर्ड कौन सा है? ये फर्स्ट सोर्स हो गया, ये सेकेंड सोर्स हो गया। थर्ड सोर्स क्या है? थर्ड सोर्स है सॉइल। थर्ड सोर्स क्या है अपना? सॉइल। और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी कितने न्यूट्रिएंट्स हो गए? 1 2 3 न्यूट्रिएंट्स। 3 न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए एयर एंड वाटर से। वाटर से मिला आपको हाइड्रोजन, एयर से मिला कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो कम क्वांटिटी में चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, ओके। सो जो आपके ये 2 न्यूट्रिएंट्स है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एयर के अंदर से मिल रहे हैं। और दूसरा हाइड्रोजन है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब सॉइल से आपको क्या क्या मिल रहा है? थर्ड सोर्स हो गया अपना सॉइल। तो सॉइल से हमें लास्ट 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए। सो 13 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल से हमें, ठीक है। तो सॉइल में जो हमें मिलेगा NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटेशियम। NPK मिला अपन को, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन सल्फर। यू कैन राइट सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम एंड सल्फर लिख सकते हो S, ठीक है। तो ये कौन से हैं? ये सारे के सारे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स को, तो इनको बोलेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सारे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाई? बिकॉज द प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मैक्रो हो गए। अब ये मोर क्वांटिटी में चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब सॉइल से आपको ये मिल गए मिनरल के फॉर्म में, ठीक है। जो मिनरल के फॉर्म में मिले, ये 6 मिले आपको, 6 एलिमेंट्स मिले, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और बाकी जो मिलेंगे आपको वो 7 मिलेंगे सॉइल से। वो क्या क्या हैं जो 7 मिलेंगे? दैट लेट अस राइट देम ऑल्सो। कहाँ लिखेंगे? राइट हेयर, ठीक है। सो वो क्या हैं जो सॉइल से मिले, यानी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सॉइल। सॉइल ही देगी आपको, ठीक है। सो सॉइल से आपको जो बाकी मिल रहे हैं, सॉइल मेनली सोर्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, 3 सोर्सेज हैं जिनसे आपको मेनली प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आयरन है,
आयरन है, देन ये आयरन आपका, देन मैग्नीज, देन बोरोन, देन जिंक, ये मिलेंगे आपको। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, ठीक है, आयरन है, देन कॉपर है, क्लोरीन है एंड मॉलिब्डेनम है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल और रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन यू कैन से वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर असेंशियल फॉर द प्लांट और रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो दैट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। सो अब बोलो, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है मेनली सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल किया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। So according to the types of essential nutrients, these nutrients are 2 types of nutrients. The 2 types of the nutrients are there. There are macronutrients and micronutrients, ठीक है। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो, नाम से ही पता चल रहा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स और दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, एंड दीज आर दोज एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी और वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बोल सकते हो आप, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं, NPK सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में NPK हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर हो गए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, दे रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इसमें आपको अभी बताया मैंने कौन कौन से हैं माइक्रो में, ये हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम। सो ये है अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ओके। सो प्लीज लर्न दीज न्यूट्रिएंट्स and how we can management that crop production management, so that 3 patterns will be there, 3 components are there that we can manage our crop production, ठीक है। कौन कौन से हैं ये 3 components, एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, एक इरिगेशन है और क्रॉप पैटर्न है। आज हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो कर लिया, इसमें हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स किए हैं, अभी मिनरल रिप्लेनिशमेंट बाकी है, and manures and fertilizers हम करेंगे बाद में, okay। So with this, thank you and have a nice day.